how does the a kind of the travel agent interact with the airline? Yes, ma'am. Yeah, you know how to put the meal request, seat request. Yes. What we're left with is fares at the moment. But before we step on to the next, we move on. It's important to understand that how does the industry function really? Okay, Okay. ma'am. Now, we did speak about IATA. IATA, the full form International Air Transport Association. It globally kind of puts in the guidelines and controls the air traffic. Okay. Okay. And once you create a PNR, not every agent will be able to issue a ticket. I think I did tell you in the past that not every agent will be able to issue the ticket. It is only IATA agent who can issue the ticket. Yes, And ma'am. the reason why IATA agent can issue the ticket is because IATA agent is connected to bank in certain way. You know, Okay. IATA Okay. agents have given some kind of bank guarantee, and every time the ticket is issued, the withdrawal of the money of what the cost of the ticket is done through the bank. And the whole process is looked after by something called BSP, that's Billing and Settlement Plan. Okay, ma'am. The airline doesn't do it in itself. It has another authority intervening, that is BSP, that's Billing and Settlement Plan. So you can Okay, say ma'am. between the GDS and or maybe let's take it this way, between the travel agent and the airline, the billing and the billing of whatever tickets that have been issued by an IATA agent is looked after by BSP, that's Billing and Settlement Plan. Okay, ma'am. Okay, so just let's move on and see what the PPT has to say. Okay, so what is a non-IATA GDS now? GDS, you already know, stands for Global Distribution System, and Yep. A non-IATA GDS will not have any authority to issue any tickets. Okay, ma'am. Okay. Okay. So what is GDS? You already know, it's a Global Distribution System. It's a tool between travel agent and the airline, which normally is used by the travel agent to create PNRs and issue tickets. But however, a non-IATA GDS, a non-IATA GDS will not be able to issue tickets. Okay, ma'am. Okay. Only an IATA GDS will be able to issue tickets. IATA Okay. GDS means the travel agents who are IATA and have an IATA GDS. Okay. Makes sense. Uh, okay, so it does say here a non-IATA agent does not have a right to issue tickets. Some of the airlines do not show up their inventory on non-IATA system. So you must have seen when we see certain inventory on certain airlines, you can only see the inventory, or maybe sometimes the airlines are not just there on the system. Why? Because you're in non-IATA system. See, we Okay, ma'am. train on a non-IATA system because we can't train on an IATA system. Uh, Okay. because there are certain implications. There could be Okay. certain complications. They can block our inventory. They can report an abuse of the inventory. So we can't teach you on an IATA system. So what we're doing is we're training you on a non-IATA system at the moment. Okay? So some of the airlines do not show up. So you must have seen that airlines like Emirates and Egypt Air, they don't show up on a non-IATA system because it's a non-IATA system. That is why. Okay, So ma'am. the advantage with an IATA system is that you get to see more airlines. You get to see the inventory of more airlines there. So that's an advantage of being an IATA system. Okay. Okay, now there's an advantage of being non-IATA GDS also, that you don't get any ADMs. ADM stands for Airline Debit Memos. That's kind of a penalty if you go wrong while issuing ticket or while reissuance or refunding. Okay, ma'am. Airline Debit Memos. It's kind of a penalty which is issued by airline along with the service charges. Yeah. Okay, if you do not issue the ticket properly, in the sense ki
आपने अगर गलत फेयर उठा लिया या गलती कर ली कहीं से, क्लाइंट से गलत अमाउंट लिया, तो आपको, और एयरलाइन को प्राइमरली गलत अमाउंट दिया, तो आपको एडीएम आ सकता है. दैट्स कॉल्ड एयरलाइन डेबिट मेमो. दैट्स अ पेनल्टी. Okay, ma'am. Is it like common to get ADMs, ma'am, as being IATA agent? Yes, yes, it is quite common. That is why initially we do not recommend, being an IATA. First, get hands on to non IATA. After Okay, some ma'am. time, you can get IATA once you are Okay. familiar with the system, because ATMs are high. They are expensive. They are not. Um, for example, if you issue a ticket wrongly, or if you do a issuance wrongly, you can get high Okay. penalties. Yeah. Okay, ma'am. Okay. Makes One of my sense. Okay. students, he said, my office received an ATM. It was my fault, and he did not receive his salary for 3 months just because of that. Ooh, okay. It could be Okay. huge. You can't imagine. So it calls for a huge responsibility when you're an IATA and you're issuing tickets. Okay, ma'am. Okay. Okay. Makes sense. Okay. Okay. Another advantage, though I don't call it an advantage, but could be, one does not have to bother about canceling the PNRs. However, the airline can block the inventory. If you are a non-IATA GDS and you keep creating PNRs, and there is no issuance on that particular PNR, you're not really issuing, just creating for maybe a practice purpose, or maybe you're not really issuing tickets on that, the airline Okay, can ma'am. get really annoyed and they can block your inventory. Okay. Okay, ma'am. So this Okay. also happens. One has to be careful. So there are advantages, but then there are certain things that you have to be careful about. That if you keep, you're not really issuing tickets, you're not giving any business to the airline, and you're using the GDS system just to create PNRs and not really using them, or you don't have real actual clients who are actually flying, then they can even block your inventory. So you've got to be Okay, ma'am. okay. Okay. So any questions still here? I have a few questions in my mind, ma'am. Like, Yeah. I'm thinking, कि मैं, I'm going ahead in a sense. How can a person be, let's say, an ITA agent? Okay, What's the we will, process? yeah, we'll come to that Okay. process. We'll come to that process. Okay. So, disadvantages of non-IATA GDS can be, one cannot issue tickets. As I said, one cannot issue tickets on a non-IATA system. Okay. Another one could be if there's an inventory abuse, the airlines realizes it, they can block the inventory, and you do get to see only limited inventory on a non-IATA system. Okay. Okay. There's certain inventories which can be only which are only visible on an IATA system, and it is not there on a non-IATA system. Okay. Okay. Okay, ma'am. And there's Okay. certain times you can see the inventory, but you can't pick up the seat on a non-IATA system, Okay. on a Okay, ma'am. non-IATA GDS. So these are the things that you need to be kept in mind. Okay. Okay. Now it comes, next thing is PLB and commissions that cannot be offered to a non-IATA system. PLB says performance linked bonus. I'm going to elaborate this later. And commissions. Now, if we put commissions, what do you understand by commissions? Commissions is something, if you're selling something, you're getting some incentive, so that's commission. Okay, ma'am. Okay. So the airlines do offer, like, although, some time back, if I talk about 15, 20 years back, the commissions used to be really high, going up to 9%. Okay. But now the commissions they are not that high, could be 5%, 4%, 3%, 2%, and could be even zero IATA commissions. Okay. So that means Okay, you ma'am. only rely on the service charges. Okay. 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 But Does the again, commission sorry, yeah, tell me, please. does the commission varies from airline to airline, ma'am? It does vary from airline to airline. As a matter of fact, it varies from market to market.
When you say market to market, you mean to say Market like, means where the I person's. can. It could be different for Indian market. It would be different for Canadian market. Oh, okay. Okay, ma'am. You Okay. are sitting in Canada. You might have different commissions altogether for different airlines as compared to what we are sitting here in India, and we could be having different commissions altogether. Okay. Okay, ma'am. Okay, so commissions Okay. does not differ from market to market. It also differs from agent to agent. Agent to agent, eh? Agent Okay. to agent. That is where the PLB comes in play. PLB is performance linked bonus. If I am doing Okay. really well on a particular airline, let's say I'm doing really well on Lufthansa, okay, and Okay. you are doing, let's say, average on Lufthansa. Lufthansa would give me better commissions. They would give me better, they're not commissions, they're called PLBs, performance link bonus. You know, Okay, ma'am. I Okay. will I will have a better hold on them. So where you're getting something like 0.5, which is just a hypothetical example, Okay. I would be getting somewhere around 3. Okay. 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 Reason being, I am doing better on that particular airline. I'm promising them more business. Okay. Okay. Okay, Another ma'am. thing is this PLP thing doesn't stay with me forever. I have to meet my targets. Okay. Okay. So if I Okay, have to ma'am. meet my target, I have to ensure that my business is kind of well spread. It has been marketed well, and most of these people who have these PLB incentives, um, they are doing their business B2B. That is business to business. They have travel agents connected. They Okay. they don't deal with customers. They deal with travel agents. Okay, ma'am. Okay. 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 Okay? Maybe like more like they are dealing with the non-ITA agents, eh? Yeah, they are Who come. dealing with the non-IATA agents, and Okay. because whatever fares you see on the system, they're IATA fares. They're non-commissionable. I mean, whatever fares you see, they're without the commissions. Okay, so they are without the commissions. या Okay. जो भी आप जीटीएस पे फेयर देखोगे, अभी आगे जाके हम देखेंगे फेयर की दिल्ली टोरंटो का फेयर क्या है. ठीक है ना. ठीक है, मैम. लेट्स से 1 लाख का फेयर है आपका. ठीक है. Okay. कमीशन नहीं होगा. मतलब कि आपको जो दिखाई देगा वो कमीशन मतलब जो भी वो कमीशन दे रहे हैं आयटा एजेंट को या पीएलबी दे रहे हैं वो अलग हो. Okay. Okay. Okay, ma'am. It'll not be. It'll be what do you say? You can say it'll be on MRP, the Okay. the maximum retail price, the regular fare. ठीक है ना. Okay, ma'am. उसमें कमीशन आपको बाद में मिलता है जब आप उसको सेल करते हो. ठीक है ना. अब आप डिपेंड करता है कि आप आयटा एजेंट हो या कंसोलिडेटर मतलब जिनको जैसे पीएलबीज अवेलेबल है. You're Okay, doing ma'am. full sold on a particular airline, Okay. in a big Okay. way. Okay, ma'am. So did you understand what is PLB and commission? So Yes, some ma'am. commission is something that is offered to all the IATA agents, right? Yes. PLB कुछ selective IATA agent होंगे जिनको PLB offer किया जाएगा. They'll be different from the regular commission. Okay. Got that, ma'am. It'll be higher because you're doing better with a particular airline. You have better relationship with a particular airline. You have been giving good business to that particular airline. So the airline also wants to, kind of make you happy in some way. So they offer you Okay, ma'am. commissions, right? All good. All good, ma'am. Okay, now we're going to talk about IATA accreditation. Okay, we have Okay. 4 type of accreditation. We have TITS. I'm going to explain what is TITS. Then you have Okay. Go Light, and then you have Go Standard, and then you have Go Global. Okay, ma'am. Okay, TITS stands for Travel Industry Designated Services. Okay. Okay, so its benefits, you get industry-wide recognition, accurate identification for all your bookings and sales activities, simplification of your supply interaction as your business grows, free program hai,
कुछ भी पैसा नहीं लगता when you want to get TINs. It's just a recognition that you are now a travel agent, you belong to the industry. Okay. फॉलो अप क्वेश्चन मैम, अबाउट दीज थिंग्स यू आर टेलिंग, क्या ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है, ये वर्ल्ड वाइड है? ये वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, ये वर्ल्ड वाइड सेम है। ओके, ओके मैम, ओके। ठीक है। Getting these accreditations could be different for different market altogether, but ये है वर्ल्ड वाइड। ओके मैम, ठीक है ओके। ना, आपके तरीके अलग अलग हो जाएंगे कि आपको कैसे एक्रेडिटेशन मिले। ठीक है। ओके मैम, लेकिन आपको आपको वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि कनाडा में सीन क्या है। ठीक है मैम, ठीक है ना, लेकिन ये ऐसे ही है। ओके, ठीक है। ठीक है मैम, इसका कोई खास बेनिफिट होता नहीं है, फ्री प्रोग्राम है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस पे टिकट इशू कर पाओगे। ओके, जस्ट a recognition that okay, you are from the industry, you are an agent. okay. Like ठीक I है। can't even, like, will I be able to even like access the GDS system with, with being a आप TID? आपको आपको जीडीएस अगर चाहिए तो आपको बाकी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ठीक है ना। Okay मैम, ओके, एंड अगेन मैं आपको फिर बता रही हूँ कि it depends from market to market कि आपका मार्केट क्या चाहता है। आपका ओके मार्केट, मैम, अगर आपको एमेडियस सिस्टम चाहिए अपने एंड पे, तो आपको ठीक है मैम, वहां के किसी लोकल वेंडर से जो एमेडियस प्रोवाइड करते हैं, आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको उनसे पूछना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स क्या है, बिकॉज आई कैन गिव यू द डॉक्यूमेंट्स जो इंडिया में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है मैम, ठीक है ठीक ना। है, लेकिन वहां पे आपको अगर सिस्टम चाहिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पे यू विल हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ओके मैम, ठीक है ना। ठीक है, तो टिट्स कुड बी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, ओके मैम, टिट्स कुड बी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, और मे बी you know it is okay to not have kids also. ओके, It would depend again. ओके, Okay. So the uh, I would say one cannot issue tickets just by its number. So what is TITS good for? एक तरह से recognition आपको मिल जाता है इंडस्ट्री में, that it could, some of the hotels they ask for TITS number, so uh, that could benefit a bit, you know. ओके मैम, तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि TITS is only beneficial if the agent wants to make hotel bookings on ओके, GDS. ठीक है मैम, ठीक है। Okay, now next important thing, very that is IATA Go Light. ठीक है ना। अब ठीक है now मैम, what is IATA Go Light? See what happened in the market late earlier was कि जब किसी को ट्रैवल एजेंट बनना होता था, एंड एक अच्छा ट्रैवल एजेंट, एक renowned ट्रैवल एजेंट, so they had to go for being IATA, because IATA was something like a certification. Okay, कोई भी बड़ी कंपनी आपके साथ तभी डील करेगी जब आप IATA ट्रैवल एजेंट हो गए। ठीक है ओके ना। मैम, ठीक है, कॉर्पोरेट्स की बात करूं या बिग फर्म्स की बात करूं, आपसे तभी डील करेगी जब आप आयटा होंगे। ठीक है ना। ओके, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब आयटा आपको होना पड़ता था तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी थी। Not everybody had that kind of that kind of money to be invested. बहुत सारे ठीक है, ट्रैवल एजेंट्स थे जिनको लगता था कि अगर आयटा होते तो हमें बेटर बिजनेस मिल पाता। Okay, so kind of ठीक है, authorities realized this problem, and they came up with an alternative called IATA Golite. ओके मैम, ओके, सो IATA Golite में ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाती है। ठीक है ना। ओके, आपको अपना पैसा जो है ब्लॉक नहीं करना पड़ता। ओके, ठीक है। तो मैं आपको अब बता के चलती हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। अगर आपको आईटा एक्रीडिटेशन चाहिए तो इंडियन रुपीस के हिसाब से मैं बात करूँ तो 80 to 1 लाख के आसपास आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, इन द सेंस कि आपको सारे पेपर फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरा करने के लिए और उनकी जो फीस वगैरह होती है सब कुछ मिला के 80 to 1 लाख की फी होती है, इंडिया की बात कर रही हूँ। ओके मैम, ओके, है ना। उसके बाद आप जरूर बीएसपी के साथ कनेक्टेड रहेंगे। आपको हम्म, एयरलाइन से कैपिंग मिलेगी कि आप इतनी टिकट इशू कर सकते हो हमारे जीडीएस पे, जीडीएस पर। लेकिन आपको पैसा ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जब अगर आप नॉर्मल, जैसे अगर हम बात करें आईटा स्टैंडर्ड की,
ठीक है ना। ओके आईटा मैम। स्टैंडर्ड में ये होता है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में अबाउट 8,20,000 का मिनिमम फंडिंग रखनी पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है मैम। वो ओके। अमाउंट आपका वहां पे एज बैंक गारंटी ब्लॉक हो जाता है। वो अमाउंट आप ही के लिए ही है, आपने ही यूज करना है, आप ही की टिकट्स में यूज होगा जो भी आप इशू करेंगे, लेकिन वो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, आपने इतना अमाउंट रखना ही रखना है, ठीक है। ओके। तो ओके मैम। आयटा स्टैंडर्ड हियर, ठीक है। आयटा गोलाइट आप ये समझिए उसी का एक छोटा इंफीरियर वर्जन है, जहां पे ओके। आपको पैसा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू आर ओके। डूइंग इज आप एक्रीडेशन ले लेते हो, आप जो जो टिकट इशू करते हो उसके हिसाब से आप यू कीप पेइंग, इट्स लाइक अ प्रीपेड कार्ड। You have ओके। made the payment first, and then it is then you're paying for you paid the payment first for the ticket, and then you issue the ticket. ओके मैम। ठीक ठीक है है। ना? So it is meant for those smaller retail agents who have started their business, want to be an IATA, want to earn commissions, but at the same time इतने बड़े नहीं है कि वो लोग ब्लॉक करके रखते हैं इतना पैसा। ओके, क्वेश्चन फॉर यू मैम। या जो ट्रांजैक्शंस होती हैं फ्रॉम द आईटा साइड, हम्म क्या वो रियल टाइम में होती हैं, और like इज इट मोर लाइक कि व्हाट वी गोना हैव लाइक अ 7 day settlement period, like 14 days settlement it period? is it is a weekly settlement. It is a Okay. weekly settlement. You have to settle the amount within a week's time. It's a cycle they call, ठीक है ना। सो वीकली सेटलमेंट होती है आपकी, और उसके हिसाब से आपको इसको सेटल करना पड़ता है। Okay. बट आयटा ठीक है। गो लाइट पे यू कांट गो बियॉन्ड ऑफ वट एवर मनी यू हैव रिचार्ज इट फॉर, यू हैव चार्ज इट फॉर। मतलब आपको पहले ओके। पैसा, उसके बाद टिकट इशू होगी, ठीक है मैम। ठीक है। ठीक है। लेकिन जो आपका नॉर्मल आयटा होता है, आयटा स्टैंडर्ड होता है, उसमें बैंक में आपके पैसे पड़े हैं। जैसे ही आप टिकट इशू करोगे तो रात को मिडनाइट में वो पैसे आपके बैंक से डेबिट हो जाते हैं। सो फिर ये 7 day साइकिल तो नहीं हुआ मैम, अगर वो रात को ही कट कर रहे हैं, सो व्हाट डज 7 day साइकिल मींस इन दैट केस? मैं आपको बताती हूँ होता होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 8,20,000 का आपका अमाउंट है बैंक में, जो आपका मिनिमम अमाउंट है, ठीक है ना। ठीक है तो मैम। अगर आपका 1 लाख का टिकट है, ठीक है ना, ठीक है। अमाउंट अब बच गया 7,20,000, ठीक है मैम। ठीक है ना। तो एक्चुअली अब वो आपको ये बताते हैं कि आपका जो अमाउंट बच गया है वो 7,20,000 की ही टिकट्स आप इशू कर सकते हो। ओके। लेकिन वो सेटलमेंट ओके। तभी होगा जब वो आपका बीएसपी का एक जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है वैसे ही बीएसपी का आता है, स्टेटमेंट आता है। वो सेटल तभी होगा जब आप उसको जब आप उसको सेटल करोगे, बट जो अमाउंट होगा वो आपके अवेलेबिलिटी के लिए कम हो जाए, ओके। ओके। ठीक है ना। ओके मैम। तो आपको 8,20,000 अवेलेबल था पहले, अब वो सिर्फ ठीक सेवन है। लाख 20,000, हालांकि अमाउंट हैज टू बी मोर 8,20,000 यू हैव टू कीप मिनिमम इन द अकाउंट। ओके। लेट्स से ओके यू मैम। हैव 20 lakhs इन द अकाउंट, तो आपका 1 लाख ओके। कम हो जाएगा। नाउ द अवेलेबल अमाउंट फॉर यू फॉर विच यू कैन इशू द टिकट इज 19,000, 19 लाख। ओके। 19 lakhs। ओके। या ओके मैम। ओके। हालांकि सेटलमेंट दे आर गोइंग टू विड्रॉ द मनी एज पर बीएसपी साइकिल, बट जो अवेलेबल अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, साउंड्स गुड मैम। ठीक है। So IATA Go Light is beneficial to retail travel agencies. It renders agencies branding and customer trust. They too have PSP cycle just like IATA Go Standard. Any questions ओके। here? यस मैम, आई डू। एनी एजेंट मैम, who's like brand new, like जिसने एक भी टिकट इशू नहीं करी है, Hmm. will ITA provide this ITA Go Live to them, or I do need to have certain amount of tickets जो मैंने issue करी हैं, as being a non ITA agent, which I have to show to them? See, if I talk about India, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप right in the beginning you want to go for IATA Go Light, you can go for it. Okay. You can go for it. Okay, ma'am. Okay. Okay. And you don't have to qualify saying, okay, these many tickets I've issued already, so I am an agent. And if you want to go for IATA, yes, certain documents which would be required. Again, Okay. certain documents would be required, but again, it matters, it differs, it varies from
market to market again. Okay, but in if we talk about India, ma'am, so एक Hmm. like fresher भी आईटा गो लाइट ले सकता है. ले सकता है, there is no issue. Wow. Okay. Okay. And how is the paperwork for you guys in India, ma'am? Like straightforward है या उसमें कुछ complexities हैं? मैं अगर आपको बताऊं, जो आप ये कॉस्ट जो बताइए, ये 80 to 1 lakh, ठीक है Yes, ना. ma'am. We have certain agents which we get it done. We don't get into the paperwork at all. In the sense कि वो जो कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम दे देते हैं, करवा देते हैं उनके. जो आप एजेंट्स कह रहे हैं लाइक आईटा के हाँ, एजेंट्स आई हैं मैम? मीन देयर वी हैव. देखो, इंडिया में क्या है कि I feel that it is going to it be different in US and Canada. इंडिया में क्या है, we have agents who can ओके. get us IATA go live. तो वो like वो सारा डॉक्यूमेंटेशन इन प्लेस कर देते हैं. जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दे विल टेल यू कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस तरीके की डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस कर देते हैं. देन वी दे अप्लाई फॉर IATA go live. तो आपको यू नो इतना हासिल नहीं होता है. ओके मैम. ओके. और इंडिया में ना वी आर यूज्ड टू दिस थिंग कि गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम पीपल. यस, ठीक है दैट्स द ना. प्रॉब्लम. यहाँ नहीं है वो ऐसा, वहां बिकॉज आई नहीं. वाज. नहीं. यस. यस. तो यस. आपको वो डॉक्यूमेंट्स में खुद देखना पड़ेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. दिस इज द काइंड ऑफ वर्क आई वांट यू टू डू. अब मैंने ओके. आपको बेसिक समझा रही हूँ कि दिस इज द काइंड ऑफ ठीक है मैम. वर्क आई एक्सपेक्ट यू टू डू. कि आप देखो वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है. I was looking into that, ma'am, and it was a PDF of 500 pages. जिसके अंदर, they were explaining, okay, what's go light, what's go standards, कौन से documentations आपको चाहिए. So that was that, yeah, वो बहुत बड़ा PDF था. बट अब So आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे इसको. exactly, yeah, यू makes sense. अंडरस्टैंड व्हाट इज गो लाइट, व्हाट इज IATA गो स्टैंडर्ड. Yeah, makes sense. तो Yeah, आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे. ठीक है मैम, done. Okay, ठीक है ना. नाउ यस, सो एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? all good so far, ma'am. Okay, so advantages of IATA Go Light enables the travel agents to issue tickets. Commissions are offered by vendors. Vendors मतलब airlines हो गई, hotel हो गए, car Okay, ma'am. या Okay, car rentals हो गए. So you can get commissions. okay, It does not call for huge investments being IATA accredited agency. So आपको branding भी मिल गई. okay, ठीक. ma'am. बट एट द सेम टाइम आप आयटा भी हो गई, ब्रांडिंग भी मिल गई, और आप टिकट भी इशू कर पाओगे, और आपको एक तरह का यू विल बी एट ईज. Okay, ma'am. राइट. नो नीड टू ब्लॉक फंड्स. Okay, ओके. द okay, ट्रैवल ma'am. एजेंट्स गेट टोटल कंट्रोल ओवर द पीएनआर एंड टिकट इशूएंस. अच्छा, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है बीइंग अ नॉन आयटा जीडीएस कि आप पीएनआर बनाते हो, उसके बाद आप किसी और को दे देते हो वो पीएनआर टिकट इशू करने के लिए. Okay, okay, ma'am. है ना. Okay, सो यू आर लेफ्ट टू हिज मर्सी. ये okay, पीएनआर. तो एक अगर आप आयटा एजेंट हो तो यू हैव अ टोटल कंट्रोल ओवर योर पीएनआर, योर टिकट इशुएंस. एंड देन ऑफ कोर्स जो आयटा एजेंट आपकी टिकट इशू कर रहा है, ही विल आल्सो चार्ज यू सम अमाउंट. okay, 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 ही इज ma'am. नॉट गोइंग टू डू इट फॉर फ्री. नॉन Okay, आयटा जीडीएस से कर रहे हो, पीएनआर बना रहे हो, तो यू नॉट डूइंग ठीक इट है फॉर मैम. फ्री. ही इज गोइंग टू चार्ज यू सम अमाउंट, सो दैट कैन बी यू नो waived off in case you are an IATA Go Light. Okay, I have some questions up here, ma'am. Yeah. So let's say I'm a ITA Go Light agent. Mm. I'm selling a ticket for Air India from, let's say, for example, India to Toronto. The Mm. fare was 1 lakh. I sold that for Mm. 1 lakh. Mm. To the customer, of course, I'm gonna charge, the fees for my service. Let's Mm. say that's like 1,000 rupees. Okay. Mm. Mm. What is, what other is the, what other things are the source of my income? Of course, service to many, of course, I'm gonna ask to pay me for that. जो Mm. commissions हैं, are those defined? For an IATA agent, yes, Oh, okay, so they are defined, eh? they are defined. So वो 1 lakh के अंदर मेरी कमीशन नहीं है, वो अलग होगी. वो अलग होगी. So when BSP withdraws money, आपका Okay, ma'am. जो भी withdrawals होंगे BSP के, वो आपकी ठीक है मैम. कमीशन छोड़ देगी उसमें. Okay,
ओके मैम, एंड जो ये कमीशन है ये क्या वेरी करेंगी या मैम ये अक्रॉस द बोर्ड सेम रहेंगी? देखिए जो कमीशंस हैं वो ऑल ओवर, एटलीस्ट मैं इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वो सेम रहती है आईटा एजेंट के लिए। क्या रहती है मैम वैसे वो कमीशन सेम इंडिया के? रहती है। लाइक व्हाट्स द It परसेंटेज? could vary from 0 to maybe 5%. ओके, ओके, 5% ऑफ दैट 1 लाख रुपीज है या मैम? एंड कभी कभी कमीशंस हमारे जो कंसोलिडेटर्स होते हैं उनको बेटर मिलती हैं, एज आई टोल्ड यू, पीएलबी, बिकॉज दे आर पर्टिकुलरली डूइंग ऑन अ पर्टिकुलर एयरलाइन, दे आर डूइंग वेल ऑन अ पर्टिकुलर एयरलाइन, तो उनको कमीशंस आईटा एजेंट से भी अच्छी मिलती है। ओके मैम, आई ओके, गिव यू एग्जांपल ऑफ लुफ्तांसा, मुझे कमीशन मिल रही है 3%, आपको कमीशन मिल रही है 0.5%। ठीक है राइट? मैम, तो ठीक है, आप भी ठीक है, आया था, मैं भी आया था। ठीक ठीक है है ना? मैम, लेकिन ठीक है। आपको बेनिफिट तब होगा जब आप मेरे को अप्रोच करोगे। एंड व्हाई वुड यू शेयर योर, अगर आई आपको आई थ्री वुड बी परसेंट ओके ना, आई वुड बी ओके। मेरे को तो जितने सी आई हैव टू गिव एन एक्स अमाउंट टू द एयरलाइन। मैंने उनको ओके मैम, बोला है कि मैं आपको इतना 20 CR का बिजनेस दूंगी विद इन अ वीक्स टाइम, so I ओके have मैम, to make sure that I generate that kind of business also. So why would ओके, I deny you? मेक सेंस, ओके मैम, ओके। ठीक है। और आप अगर एक ट्रैवल एजेंट हो तो आप ये नहीं बताओगे कि आप कहाँ से टिकट ले रहे हो, आप नहीं बोलोगे कि आप मेरे से टिकट ले रहे हो। ठीक है मैम, आपको ये बोला है कि हम ये ऑफर कर रहे कॉस्ट, आप हमसे ठीक, टिकट ले लो। ओके, ठीक है ना? सो इट बी अ लॉन्ग चेन। ओके, ओके, एंड आई एम गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट, because I would want कि जितना business, see I'm not going to keep huge incentives, ओके, because I'm a B2B agent, I'm not, मेरे को वॉल्यूम चाहिए। ठीक है मैम, ठीक ठीक है है, ना? ओके, मुझे मुझे ये नहीं चाहिए कि आई कीप ह्यूज मार्जिन्स। आई एम नॉट डूइंग बी टू सी में होता है दैट व्हेन यू कीप ह्यूज मार्जिन्स। ओके, ठीक ओके, है ना? बिकॉज यू ओके, गिविंग सर्विस टू द कस्टमर। आई My brain is not tuned to give service to the customer. My brain is conditioned to give you, to issue tickets, to serve travel agents. ओके मैम, तभी ओके, बिजनेस को भी हमें डिफाइन करना पड़ता है, इज इट गोइंग टू बी बी टू सी, इट इज गोइंग टू बी बी टू बी, बिकॉज द वे यू हैंडल बी टू सी कस्टमर इज वेरी, it's a different way, it's a different mind conditioning. ओके, एंड ओके द मैम, वे यू हैंडल बी टू बी, मतलब मैं अगर मैं ट्रैवल एजेंट्स के साथ डील कर रही हूँ, मेरी मेरी टोन अलग होगी। ओके, ओके, ठीक okay. है। I have some follow-up questions up here, ma'am. हाँ। So let's say the same ticket, हम्म, India to Toronto for Air India. हम्म, Let's say we are getting 5% commission from Air India, so that's 5,000. 1,000 from a service that becomes 6,000. So जो आप टिकट्स हम इंडिया में इशू करते हैं, क्या हम्म। उसका टोटल प्राइस टिकट के ऊपर आता है कस्टमर को? देखिए मैं बताती हूँ आपको होता क्या है कि आप जब टिकट इशू करते हो तो आप ठीक है मैम, क्लाइंट को एक आइटनरी प्रिंट देते हो। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है जिसमें मैम, उसके आइटनरी बड़ी क्लियरली उसको जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है उसमें दिखाई देती है। दिस इज ठीक है, दिस इज वेयर यू हैव टू बोर्ड फ्रॉम, दिस इज द बोर्डिंग टाइम, दिस इज द अराइवल टाइम, दिस इज द अराइवल पॉइंट। सो आप उसमें कुछ भी नहीं होता, प्राइस नहीं होता, नहीं ओके, प्राइसेस नहीं होता। व्हाट यू डू इज यू रेज एन इनवॉइस। ओके, ठीक है ना? और वो ओके इनवॉइस मैम, आपकी अपनी कंपनी से जाती है। ओके, ठीक है ना? ओके, तो आप ये सोच के मत चलिए, किसी को भी विजिबल होता है कि प्राइसेस क्या है हमारा कभी। सी यू व्हेन यू बाय अ सर्टेन थिंग फ्रॉम द मार्केट, क्या वो जी बताते हैं मैम, कि हमने कहाँ से बाय किया है? उनका नहीं अपना मैम, बिलिंग होता है, राइट? एग्जैक्टली, एंड दे कैन लाइक अगर उन्होंने कुछ चीज 10 रुपीज की ली है, इन एंड माई दे केस सेलिंग इट 1 ऑफ फॉर लाख, $50, you can't make यस, out। सो वी कैन डू द सेम टू मैम, You can लाइक do the अगर, same thing. It is the same, yeah, it is the same logic that works here. okay, so basically in this way I can earn in 3 ways. I'm gonna take my commission of 5%, जो 1 लाख की टिकट थी मैं 150 की भी बेच सकता हूँ। Yeah, but then you have other forces also, no? Market forces. Okay, but otherwise like I can do these things to the way. Yes. Okay, okay,
You have to keep a check on the prices you're selling it from, because you have competition also. Maybe it is selling it at a lower rate, at a lower cost. So you have other forces to keep a check on you. Okay, ma'am. ठीक है ना? So Okay. you have to be reasonable. You can't be charging anything. Okay. Makes और sense. आजकल तो you have everything online. As like जिस आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, what change have you seen जब से ऑनलाइन चीजें आई हैं, आप लोगों के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा है? बिजनेस करने का तरीका अलग हो गया. इफेक्ट की बात नहीं करूंगी, बिकॉज द वॉल्यूम हैज रियली इंक्रीज्ड. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मैम? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है. जहां पे सी आई टेल यू, एक बात, एक टाइम का टाइम, मतलब एक टाइम था व्हेन आई सीन फेयर्स ओनली बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकोनॉमी क्लास, इस तरह के फेयर्स होते थे. ओके मैम. ठीक है ना? नाउ the airline realized we are compromising on the volume, because हम लोग फेयर्स ही इतने महंगे निकाल रहे हैं कि नॉर्मल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर पाती. ठीक है मैम. Okay, ठीक है. so they came up with few more fares which were cheaper. ओके. So affording them increased, volume increased. ओके. ओके. ठीक है ना? ओके. तो लेकिन क्या हुआ कि इतने सस्ते हो गए थे फेयर्स कि एयरलाइन को लगा कि 99% हर एक पे कमीशन देने लग जाएंगे. हम्म. रोज स्टार्ट कमीशन नाइन हम्म. परसेंट देते थे पहले, तो उनको लगा कि अगर हम्म. इतना कमीशन देने लग जाएंगे हम लोग, तो हो गया काम, हम तो कुछ बना ही नहीं पाएंगे. सो ठीक है व्हाट मैम. हैपेंड वाज, धीरे धीरे करके उन्होंने कमीशंस रिड्यूस कर दी. ओके. ओके. ठीक है ना? और अगेन पीपल, जैसे हम भी इवॉल्व हुए हैं, एवोल्यूशन होता है हर जगह पे. उसके बाद ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज आ गई, B2B ओके पोर्टल्स मैम. आ गए, B2C पोर्टल्स आ गए. सो दीज आर ओके. मोर चीजें और थोड़ी सी चैलेंजिंग जरूर हुई, बट ओके. बिजनेस का वॉल्यूम बहुत इंक्रीज If a customer comes to me and they will like, what key, why should we buy a ticket from an agent, हो गया. instead of booking ourselves, जहाँ पे हमें cheap मिल सकती है? Why should a person buy a ticket from a travel agent? उसका क्या सी आंसर है? सी इसका इसका ये भी है कि आपको जो चीप, जितना चीप टिकट मिल सकता है, बिकॉज अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, उनको फिर भी उतना चीप नहीं मिलेगा. ठीक है ना? अनदर थिंग इज व्हेन इट इज, व्हेन कम्स टू डोमेस्टिक पीपल कैन स्टिल रिलाई. ठीक है, yeah, they have to go travel Delhi, Mumbai, Kolkata, they're still ओके okay. मैम. ठीक है. लेकिन जहां पे इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, where they require a visa, they need assistance also, travel insurance चाहिए उनको, land transportation चाहिए, then they have to rely on a travel agent along with ticket. Then they have to issue a ticket. For example, अगर if I take a flight from Delhi to Sydney ओके and मैम. I'm going by Singapore Airlines, who's going to guide them कि सिंगापुर में वीजा चाहिए या नहीं चाहिए, इंडियन पासपोर्ट होल्डर? मेक सेंस. ठीक है मैम. ठीक ओके. है ना? So we're not just giving them tickets, we are also giving consultation, right? मेक सेंस. ओके. तो रिलाय तो वो करते ही हैं. ठीक है, ओके मैम. द अदर फोर्सेस आल्सो दे आर चेकिंग, गोइंग एंड चेकिंग ऑनलाइन कि क्या कॉस्ट होगा, just to put a pressure. Thank you for watching the whole video. Please like, share, subscribe if you liked the video.